9 people were arrested earlier today for their role in the Khargone riots in Gujarat, and it appears they got foreign funding. Was it all an organized attack on Hindu processions during the Ram Navami celebrations? From Khargone to Khargone to Karauli, the Republic Media Network's investigation tells you why the riots can no longer be dismissed as spontaneous. Let's debate. घर की आप तस्वीरें देखिए कि आग अभी भी इनके घर में जो सामान है उसमें लगी हुई है। फायर ब्रिगेड को भी ये फ़ोन कई मरतबा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है और इनका जो घर की गृहस्थी है, जो पूरा इनका जो अब तक की पूंजी है, वो जलकर इसी तरह धुआं होती जा रही है। Hordes of stones were kept ready on rooftops on the path of the Ram Navami processions, ready to be hurled at the Hindu devotees. Could this be possible if it wasn't planned and organized in advance? Watch this video. Believe it or not, properties were carefully zeroed in on and targeted to be ablaze. Watch this video. There was coordinated, almost strategized stone pelting, almost as if the blueprint was already laid out. Now, look at how these perpetrators of violence had come prepared with their faces covered as they went on a rampage in what seems like the narrow lanes of a residential area in Khargone. Properties were carefully set ablaze. Match-to-match attacks across the region, almost as though the stone pelters had plotted in advance. The Home Minister of Madhya Pradesh hints at a PFI angle. PFI भी फंडिंग करता है, किया भी है, यही तो है। मैं कहना चाहता हूं कि सॉफ्ट नक्सलिज्म, यही वो दिग्विजय सिंह है जो नक्सलवाद का भी समर्थन करते हैं, आतंकवाद का भी समर्थन करते हैं, भारत की सेना पर प्रश्न खड़ा करते हैं। The devotees celebrating Ram Navami were attacked. Watch these men with face covered and rods in hand throw stones. This was no spontaneous attack. It was premeditated. That's what this footage indicates. Exacting pattern in Gujarat and Khargone, even the cops say there is more to the attack than what meets the eye. A foreign hand is what the initial investigation indicates. After further investigation, it has come to our notice that there was some premeditated planning to stop the rally at any cost, and then we have gathered certain information in this regard. We are working on it. It has just come to our notice as a premeditated planning, and we are working on that. Further investigation only will tell us any other details. From Madhya Pradesh to Gujarat to Rajasthan, there have been pockets across the country that have seen different riots. The tools and possibly the kits could be the same. The footage shows that. The initial investigation shows that, and the orchestration is for all to see. Let's debate. Rahman, I'm not blaming you, but there is no shame in accepting that this was whoever did it. It is a well-organized, coordinated attack, most cowardly act of violence on the Hindu community. That also during a Hindu festival of Ram Navami. Now, I have got all this evidence, right? Brijmohan Srivastava, you also, and Hemang Rawal ji, आप कांग्रेस के हैं, गुजरात के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं. इसको मानने में कोई आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि ये जो हुआ वो दंगा हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने की पूरी साजिश थी, पूरा पैटर्न था, सारी एविडेंस हमारे पास है कि बहुत बड़ी साजिश थी हिंदू समुदाय के खिलाफ,
है ना? तो बिल्कुल बिल्कुल है ना, कोई डाउट है आपको हेमंत जी? अर्णव जी, हाँ जी बोलिए। अर्णव जी, मैं आपको जवाब देना चाहूंगा जी। सबसे पहले तो हमने खुद ने, ये हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट जी ने बोला हुआ है कि ये लॉ एंड ऑर्डर की फेल्यूर का मामला है। जब मोदी जी गुजरात आते हैं तो 20-20, 50-50 किलोमीटर तक कांग्रेस के कार्यकर्ता को वहां पे अटेंड किया जाता है, डिटेन किया जाता है और वहां पे उनकी रैलियां वगैरह बहुत आराम से निकलती है। जब भगवान प्रभु श्री राम की आपने खुद ने परमिशन दी हुई है तो ये लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर है, आपको इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। दूसरी बात, हम भी ये कहना चाहते हैं कि जो लोग पकड़े गए हैं उन लोगों को आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनकी कॉल डिटेल्स चेक की जाए। हमारे प्रेसिडेंट जी ने ये स्पष्ट कहा है कि ये पूर्व नियोजित एक कॉन्स्पिरेंसी है और ये सुनियोजित एक जो है ये षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को जल्दी से बाहर निकालना चाहिए। क्यों इलेक्शन आता है तभी इसी तरह के षड्यंत्र होते हैं। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप जितने भी जो भी आप इंडिकेट क्या कर रहे हैं? कानून के दायरे में लेकर आप इंडिकेट क्या कर रहे हैं हेमंत जी, जरा बताइए मुझे, खुलकर बताइए ना। हम बिल्कुल आप इधर उधर की बात मत कीजिए, सीधी तरह से बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, हम क्या ये कहना चाह रहे हैं इंडिकेट कर रहे हाँ, हैं बोलिए। अर्णव जी, हम ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर का मामला है। लॉ एंड ऑर्डर की ये फेलियर का मामला गवर्नमेंट नहीं है। आपने कुछ और बोलने की कोशिश की। आपने अभी कहा कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स चेक होनी चाहिए, यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि अगर कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स पाई जाए तो आप कह रहे हैं कि जिन्होंने हिंसा की, जिन्होंने दंगा करवाया, जिन्होंने अटैक की, उनके कोई पॉलिटिकल लिंक्स है। किस पार्टी के साथ पॉलिटिकल लिंक्स है? कांग्रेस के साथ? बिल्कुल कांग्रेस के साथ बिल्कुल। ये कांग्रेस के साथ है क्या? जब आपके पार्टी के साथ? हम यही बता रहे हैं। आप किस पार्टी के बारे में? मेरा वर्जन मत बताइए, मैं आपका वर्जन, आप किस पार्टी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? हम सत्ताधीशों के सामने ये बता रहे हैं क्योंकि गुजरात में आज 40 लाख से ज्यादा लोग बेकार है। आज गुजरात में वो बात नहीं है किस पार्टी। आपने आप ये कह रहे हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दंगा करवाया और हिंदू समुदाय पर अटैक करवाई, है ना? आप तो यही कह रहे हैं ना? कह रहे हैं तो खुलकर बोलिए। अगर ये करवाया, हम तो खुलकर बोल रहे हैं। तो किस पार्टी ने करवाया? नाम लीजिए ना पार्टी का। किस पार्टी ने करवाया? किस पार्टी ने करवाया? जो भी लोग किस पार्टी ने करवाया? जो भी लोग करवाया किसने? जो भी क्या, जो भी कोई रिप्लाई है, जो भी इज नॉट रिप्लाई, जो भी रिप्लाई नहीं होती। आपकी ना मेरी है, आपकी ना मेरी है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी। संजू वर्मा जवाब दे रहे हैं आपको। और एक मिनट, दूसरी बात नहीं, आप इंडिकेट कर रहे हैं कुछ। ही इज इंडिकेटिंग दैट द बीजेपी इज बिहाइंड ऑल दिस एंड देयर हैज बीन, ऑफ कोर्स, आई मीन, आई मस्ट टेल यू दिस, व्हेन देयर इज एन अटैक in Rajasthan on the Hindu community, your BJP National Youth Wing president is dispatched with hundreds of people to protest against the state government. Why didn't you dispatch him to Gujarat? Why didn't you dispatch him to Madhya Pradesh? Arnav, now may I please answer? Yeah, thank you. You know, the question that should be asked to the Congress representative here is, जब खंभात में कुछ होता है, आपने सही कहा, लॉ एंड ऑर्डर अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट. वी हैव नेवर शाइड अवे फ्रॉम बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल. हम पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं. पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, कुछ ही दिन पहले आपके अशोक गहलोत, उन्होंने क्या कहा था? जो राजस्थान में हिंसा हो रही है उसकी जवाबदेही नरेंद्र मोदी को देनी चाहिए. उन्होंने तो यहां तक कहा कि मोदी और अमित शाह मिलकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं. मतलब गुजरात में हिंसा हो तो हमारे मुख्यमंत्री उसके लिए जवाबदेही उनको देनी चाहिए. मध्य प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो तो शिवराज सिंह चौहान को जवाबदेही देनी चाहिए. उत्तर प्रदेश में कोई हिंसा का मामला हो तो योगी आदित्यनाथ को जवाबदेही देनी चाहिए. पर जब राजस्थान में करौली में शोभा यात्रा के दौरान गुंडे और दंगाई अराजकता करते हैं, उपद्रवता करते हैं, तब अशोक गहलोत के मुंह में दही जम जाता है. उनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए. ये आपका कैसा दोगलापन है? मतलब हमारे राज्य में कुछ हो तो सही, हम जवाबदेही दे, पर कांग्रेस राज्य में कुछ हो. Sanju Verma, my next question is Sujata Pandey and Atikur Rahman, who I'm inviting on the debate. Atikur Rahman, I now want to talk about the evidence. I now want to talk about the evidence that I have, and I have so much evidence. I am full of evidence, and there's so much evidence. Binay Singh, there is so much evidence actually that this was an organized attack on Hindus. I don't know. I doubt that you are secular. I don't think you are secular personally because you are a supporter of Zakir Naik. But if you were secular, then you would have admitted that this is a terrible way to target the Hindu community. You know,
all these stones which are kept ready on rooftops to throw at Ram Navami processions? Why? Why, Sujata, why do some people have to throw stones at Ram Navami Allow me processions? to speak, Arnab. No, I'll allow you, but I just want to bring Sujata in. First time she's come on the program. What's the idea here behind throwing stones at Ram Navami processions? So the idea is the same idea now, which started with the Darka Mahal. It is the same idea with the Awad Basiga. It is the same idea with the Delhi riots with which it was conceptualized, where it's the same idea where they already know that there'd be a procession going through these lanes. And mind you, all the riots, all the stone pelting has happened through the so-called Muslim area, so-called sensitive areas. Okay, first of all, not only the stones, but also the petrol bombs are. Also, also the bottles, you know, how did they get so many Kachka bottles? Where does that come from? And it is on camera that certain leaders were inciting and guiding the entire mob. Ki unko maro, unko khatam karo. I mean, this is not just which happened, which is in the flash of pan. This has been happening. See, anyway, the riot on Ram Navami, I remember growing up, listening to all this. Sujata, who is responsible? Who is responsible, Sujata? Yeah, so I will tell you, people like Mr. Our panelist who is sitting right here are responsible. People of Muslim leaders are responsible. Arnab, who give the calls for Hindu genocide. Leaders who say Evidence. police Evidence. What evidence? People, on what grounds? On what No, grounds? you cannot. What evidence? You cannot go with conjectures. टीवी डिबेट में देखते नहीं है टीवी What थोड़ा पढ़ लीजिए these are your conjectures, Sujata. गुजरात की पुलिस आपकी कंजेक्चर है Gujarat police is your conjecture. What is Gujarat police told? That the rioters were called from outside. There's been linkage of foreign Gujarat funding. police cannot be 100% believed in. Gujarat police is under the BJP RSS influence. आपको प्रधानमंत्री में बिलीव नहीं है how can we तो this is how can we no talk on grounds of evidence and No, he wants evidence. No, he won't believe in all that. He wants evidence. Atikur Rahman, let me show you some evidence. 1 minute. Sanju Verma, please wait. Binay, evidence. A house is I'll put. just give 1 minute. No. 1 minute. You asked for evidence. I'm answering your question. What's your problem when I'm answering your precise question? Pull back. Don't be insecure. Don't be afraid. Thank you. A house is set on fire. Evidence number 1. Stones are thrown at a narrow lane where people are carrying out a peaceful Ram Navami procession. Binay, that's evidence. Stone pelting is happening from rooftops by masked men. Okay? I don't think they were wearing the mask to protect themselves from COVID. Okay? Residential area in Khargone, they go on a rampage. Properties are carefully set ablaze. Now, those houses, there are posters saying ye makan bikao hai, yani ki Hindu families are having to flee the area. Coordinated attack, strategized. He's asking for evidence. Binay, the fact is, the biggest evidence, 9 different parts of the country on Ram Navami. He wants evidence. He wants evidence from me, Binay. You give him the evidence. 9 different riot-like situations in different parts of the country on Ram Navami. Masked men carrying out these attacks on Ram Bhakts, and he is asking for evidence, ladies and gentlemen. The pictures are the evidence. The truth is the evidence. Republic is putting the evidence. This is organized violence against the Hindu community of this country, and he's asking for evidence. Binay, share the evidence. Only 30 seconds. 30 seconds, and I'll calm down. You know what the real evidence is? You know what the real evidence is? The stone pelting was a modus operandi used in Kashmir against the security forces. But now it's a pan-India phenomena. It is not organic. They are trained. The stone pelters are trained. It's certainly planned. This is the real evidence, Arnab, that a phenomena which was a symbol of Kashmiri separatists, that is a pan-India phenomena. It's a planned conspiracy, Arnab. And I'm surprised along with the whole nation that why the bulldozer has got such a hero kind of image. You know, Arnab, the bulldozer doesn't demolish the buildings. It demolishes the spirit behind the planned violence. And certainly the bulldozer has become a hero.
And the Wonderful. last point, Arnav, Wonderful. when I try to study radicalization in different countries, you know what I have found? I have found that Pakistan, a country like Pakistan, is a serious contender in trying to find the reasons of radicalization. They have tried to find the reasons behind campus radicalization. And you know what the finding is? That has been published with Routledge publication. The finding is that the level of radicalization that doesn't have any connect with the level of education. A country like Pakistan, which is branded in a certain way, they are serious in finding the level of radicalization. They are trying to study radicalization in a very straightforward manner. Evidence is But in the we are motive. trying to- No, we are trying to also escape evidence is the in the truth, motive. Arnav. No, Binay, evidence is in the motive. Arnav, What is I the want motive? my time. I'm coming to Yes, you. I'm giving you your time. time. I'm giving you Give me your 30 time. seconds. The superintendent of police of the Anand district, Ajit Rajian, after the arrest of the 9 accused, was asked, and he said, the motive of these accused, he said, the motive of the accused is that once the Ram Navami procession is stoned and threatened and attacked, then in the future there will be no Ram Navami procession. So the evidence is in the motive, and the motive, Sujata, is that in India there must never be any Ram Navami procession. The motive is that Hindus in this country must live in fear. Hindus must be afraid. Hindus must be afraid that if they celebrate, they are going to be attacked and stoned and threatened and maybe killed. Not possible. Absolutely. Not possible. Absolutely. Arnav, Every this year, has been going on for years together. This has been going on for years together. We all have grown up hearing about these sensitive areas. We all have grown up about Haider ki talwar and Kafiro ki lashe. We all have grown up hearing about, the Pakistan flags being hoisted. We all have grown up hearing about Prime Minister saying कि minorities have the first right over the resources of the country. So these have been going, but it's only changed. What has changed, Arnav? The change is earlier the voices were not heard. Now they are heard, they are multiplied, and the pushback is being given by the government and the people of India. Brijmohan, take a position. Don't look at this politically. Yes. Don't look at it politically. Yes, I agree. You agree? हमको इसे राजनीति से ऊपर एक मिनट सुजाता जी एक मिनट में बोल दूं अरुण जी आपने बिल्कुल ठीक बोला इसे राजनीति से अलग हटके हमको देखना है देखिए कि आज ये कहना बहुत मुश्किल है कि दोनों अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें आएंगी हमको इसके कंटेंट्स में ना जाके हमको इसकी रिएक्शन पे जाना पड़ेगा रिएक्शन क्या था कि वहां इस ढंग की हरकतें हो रही थी और इस मामले में वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वो पूरी तौर से फेल हुआ है इट इज नॉट एन पॉलिटिकल फेलियर ये वहां के लोकल जो एलआईबी होती है जो एसपी होता है जो कलेक्टर है ये उनका फेलियर है वहां पे दीवार पे लिखा है कि मैं इसको बेचना चाहता हूं ये एक दिन नहीं लिखा है ये उसके पहले से लिखा था अगर उसके पहले से लिखा था तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कर रहा था ये है मुद्दा और आपको पालघर में जब एक मिनट बृजमोहन जी आपको बुरा लगेगा आपको याद दिलाऊंगा मगर पालघर में जब आपके पुलिस वालों के सामने साधुओं को वहां पे जहां पे साधुओं को मारा गया तब किसकी सरकार थी तब बताइए मुझे किसकी सरकार थी बताइए मुझे किसकी नाकामी थी उस वक्त बताइए मुझे उसमें आज भी 125 किसकी नाकामी थी उस वक्त किस सरकार के होते हुए ऐसी बात हुई क्यों भड़क रहे आप भड़क क्यों गए बृजमोहन जी कुछ याद आ गया क्या कुछ याद आ गया बृजमोहन जी आप बताइए मुझे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आशा के अधिकारी को नहीं संजू और आप एक मिनट और संजू इज ऑन द डिबेट संजू वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग योजना के तहत जो मकान दिया गया था उसको डिसमेंटल किया गया इस नाम पर कि वो वहां पर आप मुझे बात बताइए प्राइम मिनिस्टर हाउस संजू इज ऑन द डिबेट 30 seconds and then close आवास योजना किसने बनाई थैंक यू Brijmohan 20 seconds response and then close thank you or no whether it is the Karauli whether it is what happened, in Gorakhnath temple, or whether it is Khargone. The fact is, all these attacks were premeditated. They were carried out by radicalized Islamists. There was possibly a foreign hand involved. And the fact is, after being the aggressors, the perpetrators, these radical Islamists say, Musalman
ladies and gentlemen, closing the debate at that very point. I thank you all very much for joining me. And I shall be back with more exposés because we've got an investigative team and an analysis team which is looking into the developments, whether it is Khargone or Gujarat or Rajasthan. See you tomorrow at 9. Thanks for watching. Good night and goodbye.